Let us take a look at the bigger picture here. See what the enterprise data platform is. Where does Hadoop fit in the picture? And then we can actually move on to reading Hadoop. So at the bottom of or at the lowest layer of any enterprise data structure, we've got raw data sources. We've got data sources from which you can actually receive the data. On top of these lie are various databases, be those NoSQL databases such as Cassandra or MongoDB, or be those relational databases such as MySQL. On top of these databases, we have the data platform, the big data platform, and that includes Hadoop. So Hadoop has its HDFS, which is the file system. It has Yarn, which is the yet another resource negotiator. Then we've got Spark, which is the data processing engine. So Hadoop manages all of these data. It sees how to distribute them, and once distributed, how to use them effectively. So Hadoop can be programmed in or used using multiple languages such as Python, R, MATLAB, Java. And there are numerous libraries in which we've got numerous algorithms, and based using all of these algorithms, we can extract the data that is residing in our basically primary data sources. On top of this, the layer above it contains the dashboard or the visualizations. And these dashboard or visualizations then are sort of our final output, which would be communicated to the client for the final decision-making process. So that's the whole structure. We've got data sources, we've got some databases, we've got Hadoop that would provide us the distribution. Then on top of Hadoop, we can use some languages or libraries that can do the analysis for us. And then the results of these would be communicated higher up. A Hadoop ecosystem consists of the following 4 basic elements. Hadoop Common contains the libraries and other modules for basic data analysis. HDFS is the distributed file system. It tells you where the files would be placed, how would they be placed. This is the equivalent of an operating system file system. Then we've got Yarn. Yarn is the resource negotiator between the multiple devices that we have. And then in the end, we've got MapReduce. This is a programming model which sees how do you distribute a job between various devices and how do you extract the results from various devices in order to get one final result. Some of the core concepts of a Hadoop ecosystem are the applications are written in high-level programming language. So there is no need for any specific language, or there is no latency in terms of communication between multiple elements. ठीक है? So एक जनरल जिस तरह हमारे पास बहुत सारी दूसरी हाई लैंग्वेजेस हैं, हम इन्हीं के अंदर इसको भी प्रोग्राम कर सकते हैं. इसी की बेसिस पे या इसके टॉप पे हम कोई भी इस तरह की लैंग्वेज लगा सकते हैं. तो उसका फायदा ये है कि हमें कोई एक्सप्लिसिट नेटवर्क प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती या टेम्पोरल डिपेंडेंसी नहीं आती इस वजह से कि हमारे पास मल्टीपल ट्रांसलेशंस हो. Nodes should communicate as little as possible. हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम nodes को independent create करें. ठीक है? वो जो shared nothing architecture that we studied while we studied parallel databases, तो हम यही चाह रहे हैं कि each node should be independent. It is fully capable of performing its task without having to communicate with other nodes. वो जो communication overhead है, that is as minimum as possible. Data is spread among the machines in advance. हम पहले ही डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करते हैं कि एवरी मशीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन डाटा. और उसमें क्या है फायदा, क्या है कि हमें एक ऑप्टिमाइजेशन मिलता है. ठीक है? कंप्यूटेशंस ऑलरेडी स्टोर्ड वाली डाटा के ऊपर हो रही हैं, सो दे आर हैपनिंग क्विकर. A basic high-level overview of the whole ecosystem. Data is loaded into the system. It is divided into blocks. Usually 64 megabyte block या 128 megabyte blocks होते हैं. ठीक है? तो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन छोटे-छोटे ब्लॉक्स में या चंक्स में होती है, and these are usually 64 or 128 MB.
टास्क्स आर डिवाइडेड इनटू 2 phases, ठीक है। ये डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। टास्क में भी फिर इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। हम कुछ टास्क पहले मैप करते हैं, पहले यू फाइंड आउट कि कौन सी डाटा के ऊपर हमने क्या काम करना है, और फिर रिड्यूस टास्क विच मीन के हाउ टू combine this result and produce the final output, ठीक है। और there is always a master program that allocates work to individual nodes। हमारे पास उस वाले काम के लिए ये जो 2 phases मैप प्रोड्यूस किए हैं, इसके लिए we have some form of a master program। Hadoop is a fault tolerant ecosystem, ठीक है। इसकी एक खास बात ये है कि it is fault tolerant, or fault tolerant in terms that failures are detected by the master program which reassigns the network to different nodes। तो हमारे पास initially क्या होता है कि अगर कोई एक आध नोड फेल भी हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि उस नोड का काम जो है हम अदर नोड्स को असाइन कर देते हैं, ठीक है। We either restart a node, ठीक है। Restarting a task did not affect the nodes working on other portions। हमने डिवीजन इस तरह से की थी इंडिपेंडेंटली कि अगर एक ने अपना काम 0 से दोबारा शुरू कर दिया तो बाकियों के काम को इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सीक्वेंस में नहीं है काम कि एक के रुकने से बाकी रुक जाएंगे, पैरेलल। फेल नोड रीस्टार्ट होती है तो इट इज एडेड बैक टू द सिस्टम, ठीक है। इसको नया काम दे दिया है और इसका अपना काम जो है हमने वो किसी और नोड को रीअसाइन कर दिया था। And the master can redundantly execute the same task to avoid slow running nodes। हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक ही टास्क किसी उस वाली नोड को, मतलब एक फास्ट रनिंग नोड को हम बार बार से टास्क दे दें इंस्टेड ऑफ द स्लो रनिंग नोड्स, ठीक है। सो दैट ओवरऑल हमारे पास जो टाइम है दैट इज रिड्यूस्ड, दैट इज मिनिमाइज्ड। Hadoop file system या HDFS जो है that was built on top of the Google file system, या जो philosophy हमारे पास ZFS Google file system यूज कर रहा था वही हमने इस्तेमाल किया Hadoop को file system बनाने का। और इसमें खास बात क्या है कि there are 3 replicas of each of the data that we have, ठीक है। HDFS creates at least 3 replicas of each of these। हमारे पास जो input file है, this is the original data that you have। For each chunk of data that you contain over here, you will put that into at least 3 different nodes, ठीक है। So there would be at least 3 different portions where you will have this data। The benefit, fail safe। अगर node A is destroyed, you can get the data from node B or node D, ठीक है। इसी तरह अगर if B is destroyed, then you've got replication या backup copies at least 2 other nodes। One thing to tell over here is only one of these data copies works as primary। तो जब भी चेंजेस करने हैं, अपडेट्स करने हैं स्पेशली, तो हम किसी एक को प्राइमरी या एक के ऊपर अपडेट करते हैं, हम तीनों को एक्टिव नहीं करते। एक के ऊपर अपडेशन होंगे एंड दीज अपडेशंस वुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन दी अदर डाटा पार्ट्स।